So I can see here we are somewhat talking about overseas aspects, purchasing from overseas, selling to overseas. These type of conversations are always interesting. So with respect to overseas aspect of fact, couple of points very clear, very straightforward. If we are selling goods outside UK, that would be zero rated. And if we are selling out services outside UK, i.e., we are exporting, that's outside the scope of it. That simple one-liner statement. Now, the second discussion in this perspective is about purchasing imports. So for imports, purchasing services from outside UK, out of scope of VAT. If you are purchasing goods from outside UK, then a concept which is called reverse charge procedure applies, where you have to account for output VAT, input VAT in the same return, these type of things. So that was one high level comment. Now let's look for this particular issue, this particular scenario. Let me take out my pen. Yeah. So 10th May 24, she purchased goods costing 5,000 goods. So we are talking about goods. We are not talking about services. And the goods were sold for 8,000 on 2nd August 24. These figures are exclusive of VAT. What entries will be made on Ming VAT return in respect of these goods? So is it only output VAT? This is, I would not say incorrect. This is correct from the given situation, but I would say incomplete. Output VAT and input VAT of 1,000 for the quarter ended 30th June 24 and output VAT of 1,600 for the quarter ended 30th September for B is also correct. So A is correct, but incomplete because point 8 doesn't consider this paragraph. Input VAT of 5,000, 1,000 for the quarter ended, output VAT of 1,600 for the quarter ended. C is also correct, but C is also incomplete. And why I am saying it is incomplete? Because it does not include this aspect. C is the only thing which on factual grounds I can say it's a false statement. Like, incorrect, false is not the right word. Maybe the more right word is it is incorrect statement because there should be no input VAT for the quarter ended 30th September 24. So input VAT would be in the quarter ended 30th June 24. Okay. So this is wrong. A, B, C are right, but incomplete, right? So based on all this consideration, I am like, since two are incomplete statements, the only one statement which is like complete statement. So the correct answer is option B.
Is this thing clear? If yes, then I'd like to move to question 38. Next question. Okay. In which circumstances will a VAT registered business be required to issue a VAT invoice? So in which circumstance? And the word is required. Required means mandatory. Okay. When standard rated supply is made to any customer, when any type of supply is made to any customer, when standard rated supply is made to a VAT registered customer, when any type of supply is made to a VAT registered customer. So if I ask you, what should be the correct option in your view? Yeah, the answer is correct. So the correct answer is option C. When standard rate, so this is incorrect due to this statement. Statement B is incorrect overall. And D is incorrect due to when any type of supply, no, only VAT, only standard rated supply. So zero rated, exempt supply, with- for these type of stuff, it's not mandatory. Okay, so let's move forward. Which item of information is not required in a simplified VAT invoice? Which type of information is not required? That's true. Good one. It sounds to be so supplier name address, that's always mandatory. Rate of VAT, always mandatory. Supply, so your registration number is mandatory, but your supplier registration number is not mandatory in your VAT invoice. Okay. How will an overpayment of VAT of 5,400 be reclaimed from HMRC? How you reclaim this from HMRC? By entering it on the current VAT return, by claiming, by making a separate claim, by submitting. Yes, if you get overpayment of 5,400, uh, what to do? So I hope you recall the concept of errors in VAT, and there was a concept of small error. So the one-liner context was if a small error, it can be adjusted in next VAT return. But if error is not a small, you need to inform HMRC in writing, they will adjust, right? Now just need to establish whether this error of 5,400, this is a small error, yes or no.
if a small error can be adjusted in next VAT return. So a small error was any error less which is less than 10,000 or which is any error which is below the higher of, and at that time we normally conclude that always like bare minimum 10,000 would always your small error, right? So hence you can uh, it is very clearly meets the definition of a small error, and if it meets the definition of a small error, then as per the concept it can be adjusted. It can be adjusted. So like no need to inform HMRC separately, you can adjust. Okay. So by entering into the current VAT return, by making a separate claim to HMRC, by resubmitting the incorrect VAT return, and by submitting a return just for the overpayment. So based on the discussion, if I ask you what should be correct answer in your view, then based on the discussion, whatever we have till yet, like since it's a small error, so you can simply adjust in next VAT return. So no need to make a separate claim, separate VAT return. So probably B, D type of things, incorrect return, these type of things would be required if you exceed, if your error is not a small error. Okay. This scenario relates to questions 1 till 45. Elise commenced trading on 1st January 24. During the period 1st Jan to 30th April 24, her taxable supplies were 9,000 per month. During the period 1st May to 31st August 24, they were 10,500 per month. And during the period 1st September to 31st December 24, they were 12,000 per month. Alice is now in the process of completing her VAT return for the quarter ended 31st March 25. During the quarter, sales invoices totaling 66,900 were issued in respect of standard rated sales, while standard rated expenses amounted to 19,200 inclusive of VAT. From what date Alice was required to register for VAT? So registered for VAT is required when you for 12 months period when your turnover exceeds 90,000, 12 months turnover. So if I think from the 12 months turnover perspective, from 1st Jan to 30th April,
it is 9,000 per month. I'm talking about 4 months. So for these 4 months, that amounts 36,000. Then from 1st May, 10,500 again multiply by 4, that works out to be 42,000. Then, so I'm looking at somewhat 78, right? So after August, I'm considering only September. And for 1 month, the turnover was 12,000. So if I make a count, is my 12 months turnover, like what is the sum of that turnover? So I can see it is 90,000. So September means on 30th September, my 12 months turnover already exceeds 90,000. So from this date, within 30 days, मुझे वैट रिटर्न के लिए कंपलसरी अप्लाई करना होगा, और कंपलसरी अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मंथ की 1st डे से वैट चार्ज करना स्टार्ट करूंगा। मतलब 30th सितंबर से 30 डेज में मुझे अप्लाई करना होगा, विच इज लाइक 31st अक्टूबर तक मुझे अप्लाई करना होगा। और मैं वैट चार्ज करना कब से स्टार्ट करूंगा? 1 नवंबर से वैट चार्ज करना स्टार्ट करूंगा। इज दिस थिंग क्लियर? If yes, so I like to move forward. Which one of the following is not a condition? Not a condition. Not a condition means not a condition. For the recovery of pre-registration input VAT in respect of goods. Not a condition. So if I think about pre-registration input VAT, what are the conditions for pre-registration input VAT? Not a condition for the recovery of pre-registration input VAT. The goods must acquired within 4 years. This is a condition. The goods must have been acquired for business purpose. That's by default condition. The goods must not be sold or consumed prior to registration. Sold or consumed का मतलब ये हुआ अदर वे राउंड कि ये गुड्स आपके पास रखी हुई होनी चाहिए। The goods must have been paid for prior to registration. Again, since VAT is on accrual basis, unless you are following uh, cash accounting scheme, hence payment doesn't matter. So not a condition. D is not a condition. Um, how much VAT Alice will have to pay to HMRC in respect of the quarter ended 31st March 25? So we are talking about for the quarter ended 31st March 25. So how much VAT to be paid? Output VAT 66,900 multiply by 20%. एंड अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ग्रॉस कितना होगा वगैरह वगैरह, आपसे पूछा जा रहा है कि वैट एचएमआरसी को कितना पे करना होगा।
अच्छा, अब जो HMRC को पे किया जाता है वो नेट, मतलब दैट इज नेट, नेट ऑफ आउटपुट वैट एंड इनपुट वैट। सो मैं यहाँ पे आउटपुट और इनपुट को सबसे पहले, तो 66। शिवनीत, फॉर वैट द डिफॉल्ट मेथडोलॉजी इज एक्रूवल बेसिस। और अगेन मैं आपको उसका अदर वे राउंड आंसर देता हूँ। वैट के लिए हम हमेशा टैक्स पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट? टैक्स पॉइंट में बेसिक टैक्स पॉइंट हमेशा क्या होता है? जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी या सर्विसेज रेंडर कर दी, सो दैट इज द बेसिक टैक्स पॉइंट। फिर उसके बाद आता है इफ यू हैव इशूड द इनवॉइस विद इन 14 डेज, दैट डेट बिकम्स द टैक्स पॉइंट। सो अगर मैं एक मिनट कैश एलिमेंट हटा दूं, खाली बेसिक टैक्स पॉइंट और इनवॉइस को ही कंसिडर करूं, तो आपका टैक्स पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर टैक्स पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, अगर आपका टैक्स पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, तो इसका मतलब आपने वैट अकाउंट फॉर करना है। सो इट मींस कि कैश इन्वॉल्व नहीं भी हुआ तो भी आपके पास वैट अकाउंट फॉर हो रहा होगा, राइट? हेंस विच इम्प्लाइज कि वैट किस बेसिस के ऊपर चल रहा है, हेंस दिस इम्प्लाइज का कैश इज ऑन एक्रूवल बेसिस। सिंस दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3200। नेट वैट पेबल 10180 IE। आई होप दैट फाइन। आगे बढ़ू? By what date Ellie's VAT return for the quarter ended 31st March to be submitted to HMRC? वैट रिटर्न सबमिट करने की जो स्टैंडर्ड डेडलाइन है, दैट इज 1 मंथ एंड 7 डेज। अगर मैं इस डेट से काउंट करूं 31st मार्च से, 1 मंथ वुड बी 30th अप्रैल एंड 7 डेज वुड बी, अच्छा, वैट में वन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू रिमेंबर इज, वैट में रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट दोनों की डेट इज सेम, और ये दोनों किस तरह पे होते हैं? और ये दोनों हमेशा
इलेक्ट्रॉनिकली पे किए जाते हैं, राइट? Which VAT scheme would provide least with automatic relief for impairment losses? Uh, the answer is no. So none of the schemes is also an option, Shivneet. So वो भी एक आंसर हो सकता है. So do you want to change your option? Good one. So option A is the right one. अब जरा समझते हैं कहना क्या चाहता है. Which VAT scheme would provide least with automatic relief for impairment losses? Here the word impairment losses refers bad debts. Here the word impairment losses refers bad debts. ओके. इनमें से किस स्कीम में बैड डेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता या बैड डेट की ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाती? सो कैश अकाउंटिंग स्कीम मैंने क्यों मार्क किया? क्योंकि कैश अकाउंटिंग स्कीम में हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते. अगर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, अगर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो क्या कोई बैड डेट का कॉन्सेप्ट अराइज होगा? बिकॉज बैड डेट का कॉन्सेप्ट अराइज कब होता है? जब क्रेडिट सेल को सेल रिकॉर्ड किया जाए. अगर मैं क्रेडिट सेल को सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मतलब जो मेरे पास जितनी भी कैश अकाउंटिंग स्कीम्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग इनकम में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इनकम में हो, हम हमेशा इन जगहों पे यह बात करते हैं कि देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट. क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स इन कैश अकाउंटिंग स्कीम सेल कंसिडर ही नहीं की जाती. अगर सेल कंसिडर नहीं की जाती तो बैड डेट की फटीक खत्म. आई होप दैट इज क्लियर. गुड जॉब. सो आई हैव सेव दिस फाइल. मैं ये आप लोगों की ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा. मैंने फाइल सेव कर दी है, क्लोज कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन टू प्लेटफॉर्म. मैं लॉग इन हो चुका हूँ. आई जस्ट सॉरी, नहीं हूँ मैं लॉग इन. आई थॉट आई हैव लॉग्ड इन बट आई डिड नॉट. देखते हैं, सोचते हैं.
हम्म, अच्छा। आई होप जब आपने लॉगिन किया होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी जिसमें ऑप्शन आ रहा है सेल्फ असाइन मटेरियल फॉर योर प्रैक्टिस। सो इसमें मैंने यूके वेरिएंट सेलेक्ट किया। वन बाय वन जरा एक दफा मेरे साथ पेपर मार्क कर लेना कि आपके पास कौन कौन से पेपर्स होने चाहिए। सो सबसे पहले मैं पास्ट एग्जाम पेपर्स में गया। पास्ट एग्जाम पेपर्स में सितंबर दिसंबर 24 असाइन होना चाहिए, जून 24 असाइन होना चाहिए, सितंबर दिसंबर 23 असाइन नहीं करना, जून 23 असाइन नहीं करना। ओके। सितंबर दिसंबर 22 असाइन नहीं करना, जून 25 असाइन करो, सितंबर दिसंबर 25 असाइन करो। सो पास पेपर्स में से इन टोटल चार पेपर्स ऐसे हैं जो आपके पास असाइन होने चाहिए। हाँ, आउट ऑफ सेवन देर आर टोटल ऑफ फोर पेपर्स जो आपके पास असाइन होने चाहिए। डन हो गया पास्ट एग्जाम पेपर। सो सेवन में से फोर, फोर कौन से, 24 के दो पेपर्स और 25 के दो पेपर्स। 23 और 22 असाइन करने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि ये पेपर्स पुराने फाइनेंस सेट के हिसाब से, लाइक पुराने वक्तों में हुए थे। एग्जाम के, सॉरी, प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी सी एक बैड टेंडेंसी है कि जैसे ये पेपर जब हुआ था उस वक्त के जो टैक्स रेट्स रूल्स रेगुलेशंस थे वही इसमें हुए हुए होंगे, वो अपडेट नहीं हुआ होगा। सही है। जबकि ये चार पेपर्स आपके एग्जाम किट में अवेलेबल हैं और चारों पेपर्स एग्जाम किट में, चारों पेपर्स एग्जाम किट में अपडेटेड रेट्स वगैरह के साथ अवेलेबल हैं। सो देयर इज नो नीड टू कवर इट फ्रॉम हियर। स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन है असाइनेट, मेरे पास पहले से असाइन हुआ हुआ है, इसलिए मुझे उसने बोल दिया गेट लॉस्ट टाइपिश। प्रैक्टिस एग्जाम, दो पेपर्स हैं, अगेन दोनों मेरे पास असाइन हुए हुए थे, अगेन इसने मुझे बोल दिया गेट लॉस्ट। ब्लैंक वर्क स्पेस फॉर योर प्रैक्टिस एट प्लेटफॉर्म असाइन होना चाहिए, अगेन समझ गए होगे। ब्लैंक वर्क स्पेस के बाद मॉक पेपर। नहीं नहीं, वो नहीं हुए होंगे अभी, शिवनी टेंशन नहीं लो, वो टाइपो होगा। अदरवाइज एसीसी वाले अब इतना वो नहीं है, एडवांस नहीं है। हो गया ये साइन, आई गेस, यस। चेंज थे फिर इग्नोर कर दो। मैं एक दफा दोबारा प्रैक्टिस पे आ जाता हूँ। सही है। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस एग्जाम की। ना तो नहीं चाहिए ऐसा। तो फिर ये पेपर्स रहने दो, दैट्स व्हाट आई कैन से एट मैक्स।
इस बार सिर्फ प्री मार्च ही सही है या गुड टू सी दिस एसीसी वाले आर सो एक्टिव दीज डेज टुडेज पाकिस्तान इंडिया मैच राइट स्पेसिमेन 15 जून 25 24 प्री सितंबर 25 मॉक सो शिवीत पे कंफर्म करो आपके पास कितने पेपर्स नजर आ रहे हैं शिवमीत जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन एक 4 पेजर नोट्स हैंडआउट्स टाइप की चीज एट टाइम्स मैं सर्जा हम लोग शेयर करते हैं आई एम नॉट श्योर यू हैव इट और नॉट विच इज कॉल्ड एज टाइम लिमिट्स एंड इलेक्शन डेट्स या इन टोटल ओके सो वन बाय वन आपके पास इन टोटल कितने असाइनमेंट्स शो रहे हैं लाइक फॉर टैक्सेशन मेरे पास 14 असाइनमेंट्स आ रहे हैं अगर मैं दो हटा दूं कि दो वो असाइन नहीं किए होंगे मॉक वाले प्रैक्टिस वाले और मेरे पास दिसंबर का मॉक एक आ रहा है 2 3 एक्सक्लूड सितंबर का मॉक आ रहा है पास्ट पेपर्स भी तो चार और आ रहे होंगे असाइनमेंट में नो 4 पास्ट पेपर्स ओके ओके सो पास्ट पेपर्स पर्सपेक्टिव
आई पर्सनली सजेस्ट कि हम जून 24 या सितंबर दिसंबर 24 में से कोई एक पेपर कर लें। एक पेपर मैं आपके साथ एज एन लाइक उर्दू सेशन में कवर कर लूंगा, और एक पेपर लेट सपोज मैं इंग्लिश सेशन में कवर कर लूंगा। सो अभी हम लोग अगर इफ यू आर ओके और इफ यू हैव एनी फीडबैक वी कैन डिस्कस, हम ये वाला एक पेपर कर लेते हैं सितंबर दिसंबर 24। मार्क एग्जाम क्यों दे रहे हैं? जस्ट अ सेकंड।
सॉरी। मैं बस ये देख रहा था कि जून 24 का जो पेपर है जिसमें एक कमेंट लिखा हुआ आ रहा है कि ये रिज्यूम करना, तो मैं बस ये देख रहा था कि ये पेपर में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो नहीं हुए हुए, सो आई कैन सी कि इस पेपर में अटेम्प्ट कुछ नहीं हुआ हुआ। सो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पेपर। सो मेरा अपना ख्याल है कि हम ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जून 24। December 24 मैं रिजर्व रख लेता हूँ फॉर इंग्लिश सेशन, वो इंग्लिश सेशन में कवर अप कर लूंगा। ये उर्दू आपके साथ जो है मैं ये वाला पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूँ। सही है। और ये दो पेपर्स अटेम्प्ट करने का रीजन ये है कि ये वो पेपर्स हैं जो एग्जाम एग्जाम किट में अवेलेबल नहीं है। ओके। चले, सही है। आई होप आपने जून 24 वाला पेपर ओपन अप कर लिया होगा। मैंने कर लिया जून 24 का पेपर ओपन। और जून 24 में आई एम एट क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। यू शुड अज्यूम दैट टुडेज डेट इज 15 मार्च। 23। You are a trainee certified chartered chartered certified accountant dealing with tax affairs of AFIA, AFUA, and ACUA, who have been in partnership since 6th April 2009. The partnership profits have recently increased, so the partners are considering incorporating the partnership business on 6th April 23. Incorporating the partnership business, what does it mean? कि हम इस सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करें, कंपनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे, कंपनी स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दें। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर दें। ओके। द न्यू लिमिटेड कंपनी विल बी कॉल्ड ट्रिपल ए लिमिटेड। ओके। आफिया, अफुआ एंड अकुआ की जो कंपनी होगी उसका नाम होगा ट्रिपल ए लिमिटेड। योर असिस्टेंट हैज करेक्टली कैलकुलेटेड सम ऑफ द रेलेवेंट टैक्स फिगर्स। सही है। पार्टनरशिप, if partnership con- if the partners continue to trade as partners, their total income tax liability and NIC will be income tax class 2 NIC, class 4 NIC। सो ये शायद क्वेश्चन पिकअप करने का एक रीजन, ये क्वेश्चन पिकअप करने का एक रीजन ये भी है कि ये पेपर्स एग्जाम किट में अवेलेबल नहीं है। और इनके पेपर सॉरी इन क्वेश्चंस के आंसर्स स्टिल, एज यू कैन सी, आई कैन गो बैक एज वेल, कि ये क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं ये फाइनेंस एक्ट 24-25 पे नहीं है, दे आर ऑन 23-24। आई कैन एंड आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ सम इंस्टेंसेस।
एग्जाम इंस्ट्रक्शंस पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रही। तो अगर आप सिर्फ एनआईसी के रेट्स देखो तो आपको एनआईसी के रेट्स देख के सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि ये रेट्स कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है, थोड़े से स्टेल। लाइक थोड़े से स्टेल का मतलब ये कि इट्स बेस्ड ऑन फाइनेंस एक्ट 23, नॉट इवन ऑन 24। सो दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस, कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी तरफ से भी एक आपको पता चल जाए कि अपडेटेड लाइक रेट्स वगैरह के हिसाब से सॉल्व किया जाए तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे। सही है। चलें स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स क्लास 2 एनआईसी, क्लास 4 एनआईसी, और ये चीज मुझे अभी क्लिक अपने माइंड में इसलिए की आपसे बात करते हुए क्योंकि इन द फाइनेंस एक्ट 23-24, सॉरी 24-25, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनआईसी। क्लास 2 एनआईसी, क्लास 4 है, क्लास 1 है, 1A है, सो क्लास 2 एनआईसी खत्म हो गया है। This is based on AFIA, AFUA, and ACUA sharing profits equally. The figures are after taking account of personal pension made by each partner. None of the partner has any other income except of their partnership share. So, इस पैराग्राफ की देर इज एन इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर मैं इसको वो करता हूँ डिवाइडेड बाय 3, मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो हर पार्टनर का एक एक इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स क्लास 2, क्लास 4 एनआईसी, हर पार्टनर का एक एक का आता रहेगा। ट्रिपल ए लिमिटेड, if the partners incorporate the partnership business, triple A limited taxable total profits for the year ended 5th April 24 before taking account of director remuneration and company pension scheme will be 264,000. AFIA, AFUA and ACUA will each pay gross director remuneration of 50270। हर किसी को डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन मिलेगी ऑफ 50270 फॉर द टैक्स ईयर 23-24। The total amount of class 1 NIC payable for all three directors will be 13572. The total amount of class 1 employer NIC will be 17044. During the tax year 23-24, AAA Limited will make pension contributions of 20,000 into the company's occupational pension scheme for each of three directors. The directors will then not personally make any pension contributions. Okay. During the tax year 23-24, AAA Limited will pay dividends of 9,000 to each of three directors. हर डायरेक्टर को वो 9,000 का डिविडेंड भी देगा। Assume
The business is run as a company from 6 April 23. Calculate the tax payable by three individuals. Calculate the tax payable by AAA Limited. Compare the total tax and NIC for the partners as shown in the scenario and the tax as calculated in A1 and A2 plus the NIC shown in scenario for AAA Limited and state if there is any saving. You should indicate by the use of zero. You should assume that the rate of corporation tax remains unchanged. Before I start attempting this question, your directional views. आपके ख्याल में इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लेके कैसे चलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एक चीज तो मैं बहुत क्लियरली गाइड कर दूं, एडवाइस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे सारे रेट्स वगैरह, सॉरी, हर बंदे की सैलरी सेम है. सो यहाँ पे मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास किसी एक बंदे का टैक्स कैलकुलेट करूं, मल्टीप्लाई बाय थ्री कर लूं, या जहां मुझे थ्री की इंफॉर्मेशन गिवन है, वन कैलकुलेट करना है, तो मैं वो डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री टाइप करके कैलकुलेट कर सकता हूँ. तीनों की कैलकुलेशंस अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. डन. सो एक डायरेक्शन ये हो गया. सेकंड डायरेक्शन, और कुछ गाइड करो, क्या किस तरह से अप्रोच करना है. या और कोई चीज डायरेक्शनली. मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करूंगा बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट इनकम, बेस्ड ऑन डिविडेंड इनकम. कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँगा. और और क्लास वन. अच्छा, पहले क्लास टू क्लास फोर एनआई से ही थे. क्लास वन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एनआईसी होगा. बाय द वे वो कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो मुझे उसको कैलकुलेट नहीं करना, राइट. परफेक्ट. स्टार्ट करते हैं. Calculate the tax payable by three individuals. So this is the first requirement. Total income tax liability.
एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन इज एग्जाम बेनिफिट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जीरो लिखा। डिविडेंड इनकम, टैक्सेबल इनकम, राइट। डिविडेंड एग्जेप्शन, अब ये डिविडेंड हाई रेट में फॉल कर रहा है, और डिविडेंड हाई रेट में हो तो रेट ऑफ टैक्सेस 33.75। Total income tax liability for three persons. Is this thing clear? So, um, this is what Shivmeet I was discussing, कि अगर इनकी सबकी इनकम्स अलग अलग होती तो मैं सबको अलग अलग कैलकुलेट भी करता, बट सिंस इनकम सबकी सेम है तो एक की कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय थ्री कर ली। लाइक मैं नोट्स में पढ़ लेता हूँ, शायद अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है तो करना, फॉलो करना जरूरी है, वरना नहीं है। कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय थ्री इंडिविजुअल्स, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जो एक टैक्स एक का है वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा। इफ माई दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट देन इट्स फाइन, इफ माई दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, हो तो सकता है कॉपी पेस्ट गुड वन, तुम लोगों के पास ये भी अच्छा एक ऑप्शन है।
Okay. Corporation tax liability for AAA Limited. ये 17044 क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एज इट इज पिक किया। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट 36146, राइट? मैंने कॉर्पोरेशन टैक्स निकाल लिया, और ये लाइन हमेशा याद रखना, यू शुड इंडिकेट बाय द यूज ऑफ जीरो एनी आइटम विच आर नॉट टैक्सेबल और डिडक्टेबल। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज टैक्सेबल नहीं है, डिडक्टेबल नहीं है, इग्नोर कर दें।
तो टैक्स सेविंग है, और कितने की है? सिर्फ 167 पाउंड्स की। मैंने सिर्फ इसलिए बोला था 7, क्योंकि इतने पैसे तो जो कंसल्टेंट जिससे ये एडवाइस लेंगे ना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही ले लेगा। सो दैट्स आई सेड सिर्फ। हम्म। कोई क्वेश्चन इसमें फर्दर? वी आर डूइंग June 24। जस्ट टेक अ मिनट बिफोर आई स्टार्ट। मैं जरा अभी जो है ना, ये जो मैंने अब किया है, मैं इसको काम को सेव करने के ये फाइल आपको आइडिया होगा, डाउनलोड वगैरह तो होती नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसके स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ। यस, यू आर राइट शिवमीत। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी भी कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, लाइक अदर देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हर उस जगह पे मैं ये नंबर कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ जरूर मेंशन करूँ। लाइक अगर कोई चीज़ डायरेक्टली क्वेश्चन में अवेलेबल है, फिर तो कोई शायद प्रॉब्लम नहीं है उसका। बट जो चीज़ क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी वर्किंग भी साथ इसीलिए लिख भी रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dada ceased employment with CPLC on 31st December 23, having been employed since 1st January 17. Dada is also self-employed and prepare accounts for his business to 31st March each year. The following information is available for the tax year 23-24.
Self-employment. Data tax adjusted trading profit based on his draft account for the year ended 31st March 24 is 29,800. This figure is before making any adjustment required for advertising expenditure of 1,300 incurred during November to promote data business, expenditure incurred on client entertaining of 560, cost of data office, note 1 below, capital allowances, note 2 below. Note 1, Dada runs his business using one of the 6 rooms in his private house as an office. The total running cost of the house for the year ended 31st March 24 were 2,400. No deduction had been made for the cost of office in calculating the profit of 29,800. Capital allowances. The tax written down value of both the main pool and the special rate pool as at 1st April 23 is nil. On 1st January 24, Dada purchased a laptop computer for 1,200. Mm, This laptop computer was sold on 20th March 24 for 400. Dada has elected for this laptop computer to be treated as short life asset. The replacement laptop computer was purchased on the same day for 2,700. On 1st May 23, Dada bought his private car into business at its market value of 14,000. The car has CO2 emission rate of 39 gram per kilometer. The car is used 80% for business journeys and has self-employment. Employment. During the period from 6th April to 31st December, Dada was paid a gross monthly salary of 5,400. During the period from 6th April to 31st December, Dada contributed a total of 2,340 into Curly PLC occupational pension scheme. Dada used his private car for business purpose. During the period from 6th April to 31st December, he drove 16,400 miles in the performance of his duties for Curly PLC, for which the company paid an allowance of 30 pence per mile. On 10th May 23, Dada spent 460 on a replacement suit, which he only wore when meeting clients of CPLC. The suit was scrapped with nil proceeds on 31st December 23. Other income, on 31st May 23, Dada received a premium bond price of 500. During the tax year 23-24, Dada received interest of 270 from government securities. Dada received interest of 1030 on the maturity of savings certificates from National Saving and Investments. Okay, I can see some interesting points in the other income. We'll discuss जब इसकी relevant बारी आएगी. But like I said, I can see couple of interesting points over here. Okay, तो मुझे टाटा साहब के रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है.
ड्राफ्ट कितना था ट्रेडिंग प्रॉफिट? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इज इट अलाउड? ग्रेट। क्लाइंट अटेनमेंट, इज इट अलाउड? 2400 टोटल रनिंग कॉस्ट थी। और डाटा साहब 1 ऑफ 6 रूम से ऑपरेट करते थे। सो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन वाला हिसाब किताब लगाऊं, तो टोटल 2400 का खर्चा है 6 कमरों का, तो एक कमरे का खर्चा वुड बी। कैपिटल अलाउंस। ब्रॉट डाउन बैलेंस निल। निल। दोनों का ब्रॉट डाउन बैलेंस इज निल। फिर फिर उसके बाद लैपटॉप खरीदा था।
थैंक यू। सही है। सो आई जस्ट नोटिस योर कमेंट, ऑफिस यूज वुड बी लेस, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद लैपटॉप 1 खरीदा, शॉर्ट लाइफ एसेट में रिकॉर्ड किया बाय द अमाउंट 1200। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ लैपटॉप 1, कितने का बेचा? लैपटॉप 2 खरीदा। क्या लैपटॉप 2 शॉर्ट लाइफ एसेट है? नो। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला कि वो सिर्फ लैपटॉप 1 को क्लेम करेगा शॉर्ट लाइफ एसेट। देन अच्छा, शॉर्ट लाइफ एसेट इज अ सिंगल एसेट कॉलम। सिंगल एसेट कॉलम जब भी कभी एसेट खरीदा जाए, बेचा जाए। श्योर। सो शिवमीत, शॉर्ट लाइफ एसेट, वैसे तो इसके ऊपर कैपिटल अलाउंस परसेंटेज 18% होती है, बट क्योंकि शॉर्ट लाइफ एसेट बाय डेफिनेशन एक ऐसा एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और ये एक ऐसा एसेट है जो आपको क्लेम करना पड़ता है। मतलब हर लेस देन 8 ईयर्स वाला एसेट ऑटोमेटिकली शॉर्ट लाइफ नहीं कहलाएगा, आपको क्लेम करना पड़ता है। और दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप नोट करो तो क्वेश्चन में एक, इस पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस, सॉरी, तो दादा इज इलेक्टेड फॉर दिस लैपटॉप कंप्यूटर टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट लाइफ। मतलब हर लैपटॉप कंप्यूटर शॉर्ट लाइफ नहीं है, सॉरी, अगर है भी तो आप, इफ यू वांट टू ट्रीट इट एज लाइक शॉर्ट लाइफ देन यू हैव टू क्लेम इट। इफ यू नॉट क्लेम इट, it will not be considered or called as short life asset। सही है। ऑन कैपिटल अलाउंस पर्सपेक्टिव ज्यादा से ज्यादा 4 कॉलम्स बन सकते हैं, प्राइवेटली यूज्ड एसेट, शॉर्ट लाइफ एसेट, स्पेशल रेट पूल और मेन पूल। इन चार में से दो चीजें, शॉर्ट लाइफ एसेट और प्राइवेटली यूज्ड एसेट, दीज टू थिंग्स आर सिंगल एसेट कॉलम। इनको जब भी कभी खरीदोगे, बेचोगे, हमेशा बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सॉरी, जब भी बेचोगे बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेन पूल, स्पेशल रेट पूल, ये पूल है, पूल एक दफा क्रिएट हो गया, इनका बैलेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी जीरोइज नहीं होगा, एक्सेप्ट ऑफ टू सिचुएशन। या तो आपके पूल का बैलेंस स्मॉल पूल बैलेंस रहते हैं विच इज लाइक लेस देन 1000, या आप बिजनेस सीज करते वक्त अपने तमाम एसेट्स सेल आउट कर रहे हो। तो सिंस शॉर्ट लाइफ एसेट सिंगल एसेट कॉलम था,
सिंस शॉर्ट लाइफ एसेट सिंगल एसेट कॉलम था, मैंने सेल आउट कर दिया, तो जो भी मेरे पास अमाउंट आया उसके लिए मैंने बैलेंसिंग अलाउंस यूज किया, और अलाउंस जितना भी था वो सारा का सारा अलाउंसेस के कॉलम में चला गया। अब बात आती है, क्या इसको मंथ अपोर्शन करना है? नहीं, कैपिटल अलाउंस कभी भी मंथ अपोर्शन नहीं होता। वो सिर्फ मंथ अपोर्शन होता है अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम या ज्यादा का हो, अदरवाइज कभी भी मंथ अपोर्शन नहीं। ओके, अब मैंने इसका कैरेट डाउन कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। आई एम डन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कैलकुलेट डाटा टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 23-24। सो सेकंड पॉइंट, क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 6 अप्रैल टू 31 दिसंबर 23।
सैलरी आ गई। um Let me work this out. Net mileage allowance. Replacement suit. रिप्लेसमेंट सूट के बाद 10,000 माइल्स तक 0.45 पर माइल के हिसाब से। देन 16,400 माइनस 10,000 के ऊपर 0.25। टोटल माइलेज अलाउंस कितना बना? टोटल माइलेज अलाउंस इज लाइक 6,100। नेट माइलेज अलाउंस है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इन नेगेटिव साइन। तो मेरे पास इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आई 45080, राइट? ट्रेडिंग इनकम पिछले पेज पे कैलकुलेट की थी। ट्रेडिंग इनकम पिछले पेज पे कितनी कैलकुलेट की थी? 22,584।
प्राइस बॉन्ड, मैंने जस्ट इसके साथ एक वर्ड लिख दिया कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. प्राइस बॉन्ड विनिंग्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, राइट. इंटरेस्ट इनकम, गिल्ड्स, और गिल्ड्स के बाद नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. टैक्सेबल इनकम पूछा था. लेस, पार्ट बी डन. इफ यस तो आगे बढ़ू. आगे बढ़ते हैं. स्टेट two advantages for an employee if their employer had payrolled the taxable benefits provided to the employee. वो क्यों नहीं आ रहा स्पेस लिखने के लिए. Two advantages. Advantage number one,
Is the tax on benefits is and the employee आसान लफ्जों में बताऊं मैंने पहली बात में क्या लिखा है कि भाई जब कंपनी खुद ही बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, खुद ही एचएमआरसी को डिक्लेयर कर रही है, खुद ही इसकी वैल्यूज बता रही है, तो मुझे अलग से मतलब सरप्राइज टैक्स लाइबिलिटी का भी नहीं आती। एक दूसरा, पेरोल बेनिफिट्स क्लियर, सॉरी नॉट पेरोल, मैं कर देता हूँ उर्दू में एक्सप्लेन। आई ट्राइड इट ऑल दो। सो देखो पेरोल का कॉन्सेप्ट क्या है। पेरोल्ड या जो P11D इस टाइप की चीजों का कॉन्सेप्ट है कि आपका एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है जमा करवा। अब अगर एम्प्लॉयर ने मुझे कोई बेनिफिट दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, घर दिया हुआ है, उसकी वैल्यूएशन और ये सारी चीजें कौन कंडक्ट करवाता है? एम्प्लॉयर। तो पहले पॉइंट में मैंने ये लिखा कि भाई जो घर की वैल्यू एम्प्लॉयर ने बताई, बेनिफिट एम्प्लॉयर ने कैलकुलेट किया, तो जितना एम्प्लॉयर ने टैक्स सैलरी से काट के एस्टिमेट करके जमा करवाया है वही टैक्स है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात लिखी ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि भाई जो मंथली बेसिस पे कट के जमा होता रहे वही एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, उससे अलग नहीं है कुछ। पहली बात समझ गए? पहली बात समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट सिंपल मैंने ये लिखा कि जो बेनिफिट्स आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो एम्प्लॉयर उसकी टेक केयर कर रहा है, तो वो आपको अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब
कि जब आप अपना टैक्स रिटर्न बना रहे होगे तो इसमें कार बेनिफिट कैलकुलेट कैसे हुआ, अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट कैसे हुआ, ये चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ऑलरेडी, क्योंकि कौन डिस्क्लोज कर चुका है, ये चीजें ऑलरेडी मेरा एम्प्लॉयर डिस्क्लोज कर चुका होगा। सो दैट्स मुझे अलग से दोबारा से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? दोनों पॉइंट्स। चलें आगे बढ़ूं। You should assume that today's date is 5th March 24. Uh, Sorry. You are trainee accountant assisting your manager with tax affairs of the three unrelated limited companies. Three unrelated limited companies मतलब इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं है. These are unrelated companies. D, E, and F Limited. D Limited is trading on 30th September 23, preparing its financial statements for 17-month period 1st May 22 to 30th September 23. On 1st October 23, the company shareholders passed a resolution to commence winding up procedures. मतलब कंपनी बंद करना शुरू कर देता. The winding up of D Limited was completed on 29th Feb 24 with the company ceasing to exist on that date. Ceasing to exist on that date का मतलब उस दिन उसका नाम कंपनी अब दुनिया से खत्म हो गई. इलारा लिमिटेड. Summarize statement of profit or loss for the year ended 31st December 23 is as follows. Operating profit, other income में loan interest receivable, profit on disposal of freehold warehouse, finance cost में interest payable, profit before tax. Depreciation of 8820 qualifying charitable donations of 2300, leasing cost of 4200 have been deducted.
The leasing cost relates to car official CO2 emission of 124, which was leased from 1st June 23. E Limited incurred 2576 on entertaining clients and 75 on gift to of calendars to customers, each costing 7.5 and bearing the company's name. These costs have been deducted in arriving at the profit of 612,900. बेटा मुझे बता रहे कि 612,900 में से क्या क्या चीजें माइनस हो चुकी हैं। नोट 12 में इसने मुझे ये दो चीजें बताई। Loan interest receivable. The loan was made for non-trading purpose. The loan interest of 1,100 was accrued at 31st December 23. Profit on disposal of warehouse. On 21st December 23, Elara sold a freehold warehouse for 204,000. The warehouse has been purchased for 104,700 in 2016 and its index cost on 21st December 23 was 108,800. Elara has made to claim rollover the warehouse against the replacement cost of new freehold warehouse, which was purchased on 6 January 24 for 168,000. The freehold warehouse have been and used entirely for business purpose by Elara. मतलब ये हमेशा सारी जिंदगी दोनों चीजें किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती रहेंगी? बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती रहेंगी। Done. Interest payable. The interest payable is in respect of Elara Limited 4.5% loan notes. Interest of 5,400 was paid on 31st January 23 and accrual of 4,500 have been provided for at 1st January 23. The loan notes were issued in order for Elara to purchase plant and machinery. Capital allowances, the tax written down value of both main pool and special rate pool is nil. 10 Feb, Elara purchased an overhead crane. The crane is a long life asset. Purchased new car, CO2 emission, 30,000. F Limited forecast corporation tax liability is 132. This is based on total profits because relatively higher plans to make three measures prior to year end for the company's accounting period on. 4 new cars will be purchased for a total cost of 64. All cars will have zero CO2 emissions. Okay. So इसने liability कम करने के लिए क्या किया कि एक तरह सोचा कि मैं cars खरीद. A dividend of 6,000 will be paid to the company shareholders. So dividend pay करने से to the shareholders. Point number 2. I'm just thinking out loud. Would there be any impact on corporation tax liability? The answer is no, because dividend is not a deductible expense. Rent of 18,000 covering 6 months will be paid in advance. एडवांस रेंट पे करने से कोई फर्क पड़ेगा? एडवांस रेंट पे करने से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑन एक्रूवल बेसिस. एक्रूवल बेसिस के हिसाब से आप जो कर लो, इट डजंट मेक डिफरेंस. ओके. आइडेंटिफाई delimited accounting periods throughout the period 1st May 22 to 29th Feb 24. ये बताओ कि उसके अकाउंटिंग पीरियड्स क्या क्या होंगे 1 मई से लेकर
29 Feb 24 तक। फर्स्ट में 2022 से लेकर पहला पीरियड तो हो गया टिल accounting period cannot be more than 12 months. So the accounting period ended on 30th September 2023 must be splitted into two periods. So पहला अकाउंटिंग पीरियड, सो इट इज बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट। जब भी लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट होएगा तो मैं हमेशा उसके लिए क्या करता हूँ, उसको दो पीरियड्स में, दो पोर्शन से ब्रेक कर देता हूँ। पहला पीरियड, पहला पोर्शन इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, और दूसरा पीरियड इज ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। और थर्ड पीरियड वुड बी फर्स्ट 2024 से लेकर सॉरी इज दिस थिंग क्लियर?
फिर से पार्ट ए में कोई क्वेश्चन? पार्ट बी मूव करें? पार्ट ए क्लियर है? इफ यस तो मूव करते हैं, अदरवाइज कुछ पूछना है तो बताएं फ्रॉम पार्ट ए। ओके। कैलकुलेट इलारा के टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023। इलारा बाजी के टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023। Taxable total profits, right? So it's not talking about corporation tax liability. Operating profit 612,900. Depreciation, qualifying charitable donation, client entertaining, client entertainment not allowed, एड बैक कर देंगे, सो 2576 पूरा का पूरा एड बैक हो गया। Gifts of calendars allowed because cost is less than 50 plus advertisement भी हुई।
Interest payable. Interest of 5,400 was paid and accrual of 4,500 has been paid. तो इंटरेस्ट के हवाले से मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट के जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है मैं उसको नहीं खाली आंख बंद करके देख के चल रहा, मैं अपनी वर्किंग भी कर रहा हूँ. ओके. कैपिटल अलाउंस. मेरा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा then. इंटरेस्ट इनकम. विल डिस्कस इट लेटर. कैपिटल अलाउंस. क्रेन. Crane would qualify for तो आई एम डूइंग इट इन अ शॉर्टकट वे. लाइक पूरा लॉन्ग फॉर्म सारी वर्किंग करने के बजाय मैं थोड़ा सा जरा एक शॉर्टकट वे में वर्किंग कर रहा हूँ. टैक्सेबल प्रॉफिट्स मैंने सबसे पहले टोटल इनकम लिख कर आई. मेरे पास टोटल इनकम आई 4,00,926.
ट्रेडिंग इनकम के बाद 204,000 गेन अमाउंट माइनस 168,000, सो बेसिकली मैं यहाँ पे चार्जेबल गेन डायरेक्टली वो फिगर ले रहा हूँ विच इज माय अनइन्वेस्टेड अमाउंट QCD मैंने रिकॉर्ड किया था। 435726। um एनी क्वेश्चन? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। The amount of corporation tax which F will save for the year ending by taking three measures prior to year end 31st March 23। So अगर वो 31st March 23 सॉरी 24 से पहले जो उसने मेजर्स तीन अदद सोचे हैं, अगर वो मेजर्स ले लेती है तो उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? योर आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ओके। सबसे पहले बात शुरू करते हैं।
This will reduce corporation tax liability due to 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस। 4 के बाद डिविडेंड पेमेंट हैज नो थर्ड एडवांस रेंट। Before taking measures due to car I'm done. So I hope uh, that would be clear. You must have enjoyed it. At least I did. Not sure. So thank you very much, guys. Inshallah, we will be conducting second round of this revision session on next Saturday, Sunday, English way. Okay. So by the time, take care. Keep practicing the questions as much as you can. The more you practice, the more perfection would be.
So I'll upload this file into the drive again. Take care. Goodbye.